Okay. So now we have started the recording for our class so that the students who are absent can get the benefit from the lecture. In the lecture, we are discussing the air pollution types. In air pollution types, we are discussing the primary air pollutants and secondary air pollutants. In primary air pollutants, basically the pollutants that are directly being emitted from identifiable sources are known as your primary. Whereas when you are secondary air pollutant, when you have a primary air pollutant combining with your sunlight or your natural gases, they result into the new material. That new material is basically known as your secondary air pollutant. Now, who are the main point emitters? कौन कौन यहाँ बोर्ड पे देखो कौन कौन से point emitters बताए मैंने industrial applications. In industrial we have the manufacturing industry, then we have the chemical industry, then we have aviation industry or automobile industry. So what these industries are basically contributing, these industries are contributing these all harmful emittents into the environment. So what are these harmful emittents? Carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, unburned hydrocarbons, and your particulate. So the diesel vehicle is basically having your particulate matter. So you know what is particulate matter? Particulate matter is represented in terms of PM 2.5 and PM 10. Now these are the small minute particles that are emitted from these point sources, these point sources that are the primary air pollutants, and these are very harmful for the human lungs. Once they are being occupied in the human lungs, it becomes very difficult for the human lungs to remove that oxygen. Okay. तो आपका ये जो particulate matter 10 and particulate matter 2.5 है, ये बहुत ज़्यादा dangerous particulate matters हैं for the human body. PM 2.5 and PM 10. Micrometer. So the units are in micro. So these are very minute particles. And how these particles are basically entered into the human lung is through aerosols. Through aerosols. Aerosols. Now what is aerosols basically? Aerosols are, you see the water vapor, when a small droplet is suspended into the space. Okay. So that is known as your aerosols. So when these suspended particles, when these particulate matter enter into the suspended particle and when it is being breathed by the human body, then it becomes dangerous for the lungs to perform. Who are affected? The people who are working in these industries are mostly affected from these particulate matters. In manufacturing, whenever you are manufacturing any machine, any material, so the harmful emittents generated by the machines enter into the person who is working on that machine. Even in the paint shop, we have that spray gun. So you must have seen in the paint shop they have used that filters in their mouth. They use this filter so that the harmful pollutants do not enter into the lungs. Clear? Now what we will do is, now in the class we will work on this type of emittent, that is your carbon monoxide. Write down. What is carbon monoxide? Carbon monoxide are being produced by burning of organic material. Carbon monoxide, this one is being produced by burning of carbon organic materials such as your coal, number 1, second gas, number 2, third wood, number 3, and fourth is your trash. I will write it down. Coal, then your wood, coal, then your wood, then your from the gas,
or from your trash and etc. So these are the sources from which we are getting carbon monoxide. Carbon monoxide. And basically, the automobile industry is the biggest source of pollutant of carbon monoxide. So 80% of the emissions into the environment, the carbon monoxide, are being generated through automobiles. Clear? Then smoking cigarette. Hello. Smoking cigarette is also the resultant of carbon monoxide. Carbon monoxide, when you burn cigarette basically what does cigarette contain? It contains the filter and it contains tobacco. Alright. So that tobacco, when it chemically reacts, it produces lots of toxins. For the passive smoker, for the active smoker, both are dangerous. मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं नहीं पीता, ये साल वाला भैया पीता है, ये इतनी पीता है कि आसपास का वातावरण जो है वो बढ़ देता है. Alright, and some people they smoke weed without any filter, directly consuming the nicotine or directly consuming that tobacco. They are not using any filter, they are directly using the tobacco. Also dangerous, that is also now there is an EPA standard. What is this EPA standard? Environmental Protection Act standard. Now, Environmental Protection Act standard is saying the amount of CO into the environment affecting, and the consumption of CO is very, very dangerous. And during the traffic hours, what happens during the traffic hours? जब आप रेड लाइट पे रुकते हो, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे पूरा क्यू बन जाता है रेड लाइट पर और पूरी लाइन बन जाती है ऑटोमोबाइल्स की. So those people who are near to that are mostly affected from the carbon monoxide. Beggars, the street vendors, alright, the shopkeepers who are near to that traffic congestion, who are near to that traffic congestion are mostly affected by carbon monoxide. ये तो बहुत आवाज कर रहा हूँ. Then write down next second type of pollutant is your sulfur dioxide. Focus on sulfur dioxide. What are sulfur dioxide basically? Sulfur dioxide is being emitted into the environment by burning the sulfur that is contained in your fossil fuel, that is coal or oil. Coal or oil. Produced by burning the sulfur that is containing the fossil fuel such as your coal or oil. Sulfur containing fossil fuels coal and oil. Okay, first. Second is who are the major contributors are your coal burning power plants. So these are the major, and it reacts in the atmosphere to produce acid. So basically what happens is when the sulfur dioxide is able to react into the environment, it produces your acid, that is your sulfuric acid, that is H2SO4. Now when you inhale this sulfur dioxide, what happens? आपका जो ह्यूमन लंग्स हैं, जब हम इसमें सल्फर डाइऑक्साइड डालते हैं तो बेसिकली जो आपका ऑक्सीजन और जो गैसेस को जो एल्वियोलाई रिएक्ट करता है, रिएक्शन इन द सेंस कि आपकी ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली करता है, इसको म्यूकस कर देता है, तो उसको थिक बना देता है. तो थिक बनाने से आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक जाती हैं, तो सारे का सारा जो
सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट करेगा। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, इतने सिस्टम है इसमें। तुम्हें पता है, यू आर हैविंग द मोस्ट मार्वेलस मशीन ऑन दिस प्लैनेट। क्या बोला मैंने? The most marvelous machine on this planet. Why? Because you have a tendency to think. You have a tendency to hand. You have hands. लोगों के पास hands नहीं। Kidneys, लोगों के पास kidney नहीं। कईयों के organs अंदर से इतने ज़्यादा affected हो रखे हैं, because आपको जो सामने दिखता है वो body के अंदर नहीं होता। Body को भी cleanse करना होता है अंदर से, detoxification। कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं हम ह्यूमन बॉडी? लेमन जूस पीते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। हम कहते हैं हमारे को वेजिटेबल जूस पीना चाहिए, वो डिटॉक्सिफाई करेगा। तो बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर लीवर है, वो उसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। सुबह सुबह एक्सरसाइज कौन कौन करते हैं? क्या करते हैं? रनिंग। और बाकी सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये टेक्निकली करो। सुबह योगा करो, एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट अपना 1.5 आवर ये डेली एक्टिविटी में लगाओ। यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 30 days 40 days नंबर ऑफ थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। आपकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज करेगी। आप कोई भी चीज याद करते हो, किताब सबके यहाँ तक रहता है, क्योंकि बॉडी के अंदर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हो, जिससे आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहेगा। द इंस्ट्रूमेंट्स, द टेक्नोलॉजी व्हिच वी आर यूजिंग टुडे, मोबाइल, लैपटॉप, एवरीथिंग, दे आर गुड व्हेन यूज्ड अप टू अ सर्टेन एंड दे आर वेरी वेरी बैड व्हेन यू आर यूजिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्लींजिंग। ठीक है ना? तो आपको क्लींजिंग करनी है, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, ब्रीदिंग करो, वो योगा करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है ना? योगा आसन सीखने से कौन सा योगा आसन? ब्रीदिंग का कौन सा है? शीर्षासन, तो कालपाती प्राणायाम। ठीक है ना? अनुलोम विलोम प्राणायाम। दीज आर वेरी वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और कहाँ परफॉर्म करनी है? मॉर्निंग टाइम्स में, जब आपका ऑक्सीजन लेवल जो है एनवायरनमेंट का, इट इज 40% मोर एज कम्पेयर टू डे टाइम। सुबह 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का जो ऑक्सीजन लेवल है, दैट इज 40% हाई। एनवायरनमेंट में तो सारी चीजें सेटल हो सकती है रात को, जितने डस्ट पार्टिकल्स है रात को। मॉर्निंग के अंदर जो ट्रीज आपका सनलाइट के साथ, पहली सनलाइट के साथ जब आपका प्लांट रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। गार्डन और घर के गार्डन करो, प्लांट्स करो, ठीक है ना? तो सुबह उठ के देन जस्ट वाटर दी प्लांट, सनलाइट आती है तो एक रिएक्शन होता है जिससे आपका ऑक्सीजन रिलीज, तो दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर अस। रनिंग तो है ही अपने में एक मेडिसिन है ये बॉडी के लिए। रनिंग इज अ मेडिसिन टू द ह्यूमन बॉडी, वॉकिंग इज अ मेडिसिन, योगा इज अ मेडिसिन। गोली लेने से तो अच्छा है आप एटलीस्ट जो अपने हार्ट को पंप कर रहे हो, तो वो सारे का सारा ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के ऑर्गन में सर्कुलेट कर ब्रेन तक जा रहा है। मैं शीर्षासन 10 मिनट्स का कर लेता हूँ, होता ना शीर्षासन से नीचे का है 10 मिनट्स, मैंने नोट किया होता पूरा। और ऐसे नहीं करना सो के उठ के अपने शीर्षासन दे जाओ, यू हैव टू वार्म अप योर बॉडी, ब्लड को पूरा सर्कुलेट करना है, एक्सरसाइज रनिंग करके, देन यू हैव टू परफॉर्म द। So that's why I tell everyone to cleanse their body for optimization of the brain. तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमने ये पॉइंट्स मेंशन कर लिए यहाँ पे, ठीक है। So when it has been inhaled by the lungs, it is very very dangerous. The next compound what we are generating is known as your nitrogen oxide. ठीक है, लिखो इसके बारे में, nitrogen oxide. So these nitrogen oxides are also produced by burning. These are also produced by burning fossil fuels. The nitrogen oxides are also released by burning the fossil fuel.
And basically this oxides of nitrogen, they contribute to acid rain and smog. So I'm writing a term that is your acid rain, and I'm writing a term that is known as your smog. So what do you understand by the term acid rain? Acid rain किसको कहा जाता है? Acid rain किसको कहते हैं? जब आपकी सरफेस, अर्थ की सरफेस से केमिकल हीटअप होके, वेपराइज होके आपका क्लाउड्स के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है, और उसके बाद जो हमारी क्लाउड्स की बर्स्टिंग होकर रेन नीचे अर्थ पे गिरती है, उसको एसिड रेन बोला जाता है. तो व्हाट आर द पॉइंट सोर्सेज? All the chemical industries which are diluting the water, and how they are being accumulated into the environment, and how this rain is basically again reacting and then falling back on the earth, so containing all the types of acids, either HCl or H2O. तो इसका जो कंपाउंड बनता है वो एसिडिक कंपाउंड बन जाता है, जो एसिडिक कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करके नीचे सरफेस पे गिरेगा. और ये कहाँ कहाँ नुकसान हो जाता है? ये आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे नुकसान होता है, ठीक है. ये ट्रीज पे नुकसान हो जाता है. आपने देखा होगा ट्रीज के जो लीव्स हैं उनमें वॉइड क्रिएट होता है, स्पेस क्रिएट होती है. वो क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज ट्री के ऊपर एसिड की डिपोजिशन होती है. ये बाहर पेड़ देख रहे हो, पेड़ का जो पत्ता है, अगर पेड़ के पत्तों के अंदर स्पेस बन जाए, रेड कलर के हो जाए, इसका मतलब प्लांट के अंदर इंफेक्शन आ गया. वो स्टडी करवाई जाती है यहाँ, एक ब्रांच है प्लांट स्टडी, तो उसमें ये समझाया जाता है कि एसिड रेन आर कंट्रीब्यूटिंग टू डिकेइंग ऑफ दी. समझा? क्लियर? So basically, and what is smog basically? Smog क्या होता है? What is smog? सर आप कंटिन्यू कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं बस ऑफ